छुटकारा पाऊँ मैं, इन सब की सूचना इन शास्त्रों में दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे जाते हैं कोई भी पर्पस हो, इंटरनेट पे जाते हैं कोई भी पर्पस हो, वो सब अलग बात है, लेकिन मेन बात ये है अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे हासिल करना है, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। केवल फेसबुक पे जाने से, इंटरनेट पे जाने से आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना समय आप उसमें बिताते हैं उससे कई अधिक समय आप बिताइए प्रभुपाद जी के ग्रंथों के लिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए उसके लिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। और अगर आप प्रचार करने जाते हैं बाहर, ये देखिए पुस्तक वितरण का महीना है, गीता जयंती मना रहे हैं, ग्रंथ का वितरण कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, ग्रंथों को लेके जाते हैं। कोई पूछेगा आपसे गीता में कितने श्लोक है, आप कहेंगे 500 श्लोक है, तो लोग हंसेंगे। गीता का सार क्या है अगर नहीं बता पाएंगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन हमें स्वयं करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रभुपाद ने क्या बोला कि मेरी शिकायत क्या है कि मेरे शिष्य जो हैं मेरी किताबें नहीं पढ़ते हैं, किताबों का वितरण तो करते हैं लेकिन स्वयं नहीं पढ़ते हैं। अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सामान बेचना चाहते हैं बाहर जाके, तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या। प्रोडक्ट का नॉलेज आप सबको सबसे पहले आपको होना चाहिए। इसलिए इन किताबों का वितरण करने से पहले ये जरूरी है कि हम किताब स्वयं भी पढ़ें, स्वयं पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें। ये बहुत जरूरी है। इसे प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है ग्रंथों के अध्ययन में भी। जितना प्रभुपाद ने ग्रंथों के वितरण में जोर दिया है, उतना जोर शिल प्रभुपाद ने ग्रंथों के अध्ययन में भी जोर दिया है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज स्टडी शिल प्रभुपाद बुक्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज का टॉपिक आप सब लोगों को पता है, डेवलपिंग टेस्ट फॉर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। एंड आज सेशन 2 है। कल इसका प्रीवियसली सेशन 1 था एंड हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभुजी ने इसका सेशन 1 भी लिया था एंड आज अगेन he is back with us. So we will welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And I please request all of you to please turn on your cameras so that it becomes an interactive session. And Prabhuji will also be very delighted that he can see all of you, interact with all of you. So जिनको भी अगर मैं हिंदी में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट प्रभु जी के प्रति हम लोग एक रिस्पेक्ट भी जता पाए बाय शोइंग हिम दैट हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। सो ये एक तरीका हो सकता है कि हम कैमरा ऑन करके उनको ये जताएं so that he will also be very happy and वो एकदम अच्छे से जो है हमें इस सेशन को लीड करे। So once again welcome Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, good evening. Nice to see all of you. Who is going to translate? Hare Krishna, Prabhuji, Dhamma Pranam. Hare Krishna. I will be translating. Aha, but where are you and what is your name? Amit Kumar, Prabhuji. Where are you? Yes, Amit Kumar. Yeah. Oh, Amit Kumar. Hare Krishna, Amit Kumar. Okay, Amit Kumar. Hare Krishna. Background noise from somewhere. So, Amit Kumar, you please ask children not to disturb us for next hour, okay? Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manoh Pishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupa Kadama Yam Dadati Swapadantikam
Vancha kalpatarubhyascha kripa sinubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we started our discussion, why do we need the sacred scriptures or shastras? तो हम लोग आज ये चर्चा करेंगे कि हमें क्यों जो है शास्त्रों को पढ़ना चाहिए. Uh-huh. And क्या in क्या our हमारे जीवन में. and in our case, when we're speaking about Shastra means Srila Prabhupada's book. और हमारे स्थिति में शास्त्र जो हम चर्चा करते हैं, शास्त्र का मतलब होता है श्रील प्रभुपाद जी का के द्वारा जो बुक दिया गया है वो. Because we need not only original Sanskrit shlokas, but we also need purports to understand what is the meaning of this spiritual message. क्योंकि हम लोग संस्कृत में उतने दक्ष नहीं है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, और प्रभुपाद जी के बुक में जो तात्पर्य है उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर हम अपने जीवन के लक्ष्य को हम समझ पाते हैं. So today's presentation, Need for Sacred Scriptures, is based on this book written by Gauranga Darshan Das, and the book is called The Art of Studying and Teaching Scriptures. तो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो इस बुक पर आधारित है जो गौरांग दर्शन दास प्रभु जी ने लिखा है, और इसमें ये जो बुक का हेडिंग है वो है द आर्ट ऑफ स्टडिंग एंड टीचिंग. Studying and Teaching Scriptures. Studying and teaching scripture. Yeah, so you can see the link on the screen. You can order this book on Amazon. It is not advertisement. I'm just speaking about this book because book is nice. It is not that I was asked to advertise the book. Just book is nice, because of that I tell you about this book. तो स्क्रीन पे ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से इस बुक को परचेज भी कर सकता है. तो ये केवल कि ये एडवर्टाइज करने के लिए नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा बुक है, इसलिए यहाँ पर ये लिंक भी दिया जा रहा है कि आप इसको जा करके परचेज कर सकते हैं और उसको अध्ययन कर सकते हैं. So we have this abbreviation scripture, and each letter of this word scripture has particular meaning. तो हमारे पास ये एब्रिविएशन है स्क्रिप्चर का, जिसका हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है. So we discussed the letters from satisfaction to termination last time, yesterday. Haribol. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्लीज रिपीट अगेन. Prabhuji, can you ask your child to go on the walk, on evening walk? It is nice to have walk before going to sleep. Yes, Prabhuji. Yeah, you can ask your wife and your child to go for a walk, okay? And you will not be Yes, distracted. Prabhuji. Just tell She's on them. the way, she's on the- Tell them to go on walk. Yes, Prabhuji. Yeah. So please tell. Yes, Prabhuji. My wife is on the way. She is coming soon, Prabhuji. Haribol, okay. So we discussed letters from S, satisfaction, to T, termination. Yes, तो हम लोग डिस्कस करेंगे S for satisfaction और C for conviction. No, T for termination. From S to T, from satisfaction to termination. We've covered this topic yesterday. Yes, we have covered yesterday from S to T, satisfaction to termination we have already covered. हम लोग ये कल जो है चर्चा कर चुके हैं S से लेकर T तक. Okay. So we can repeat this topic about termination. Termination means that our troubles are naturally, automatically terminated because we are in connection with sacred scriptures, but still we are concerned about troubles that other people have in their lives. तो हम लोग जो है टर्मिनेशन के बारे में फिर से एक बार चर्चा कर सकते हैं. टर्मिनेशन का मतलब है प्रभुजी, मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन कैन यू रिपीट once again, प्रभुजी? Can you send your child on walk and can you be focused?
Is it possible or not? Otherwise, you will be asking each and every time, please repeat, please repeat. Yeah, please do it. Please do it. Otherwise, Yes, Prabhuji. we will Yes, Prabhuji. fail with we'll fail with translation. Yes, Prabhuji. Yes, I'm calling my wife. 1 minute, Prabhuji. Yeah, please do it. We can wait a little bit. Well, maybe Gaurav Prabhuji, can you translate? Do you have these skills, translation skills? Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Yes, Prabhuji, I can try. Oh, very nice, very nice. And let him arrange everything regarding his child and so on. So, yesterday we were speaking about termination. Termination means that when we are in connection with sacred scriptures, then our troubles, our anxieties are naturally terminated. तो प्रभुजी कह रहे हैं कि टर्मिनेशन का मतलब है कि जब हम स्क्रिप्चर से कनेक्शन में होते हैं तो हमारे जो भौतिक जगत के जो भी दुख होते हैं उनका जो है समापन हो जाता है So our anxieties are terminated, but still we are worried about anxieties that other people experience in this material life. तो हमारी एंजाइटीज तो खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी हम लोग को चिंता रहती है कि दूसरों को भी एंजाइटी हो सकती है Like for example, you can see this famous verse on the screen where Prahlada Maharaj, he is praying to Lord Nrsimhadev. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो श्लोक है जो प्रहलाद महाराज लॉर्ड नरसिंह देव के लिए कह रहे हैं So here he is saying, I'm not at all afraid of material existence. I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ अपने जो भौतिक जगत में जो मैं हूँ उससे नहीं डरता हूँ एंड फॉर एवर आई स्टे आई एम फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ योर ग्लोरीज एंड एक्टिविटीज इसका मतलब कि मैं जहां भी रहता हूँ मैं आपका चिंतन ही करता रहता हूँ आपके ग्लोरीज और आपकी जो लीलाएं हैं उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ But still my concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, countries. I am simply concerned with love for them. पर फिर भी मेरा जो है जो मेरी चिंता रहती है वो इसी के लिए बेवकूफ लोगों के लिए रहती है और जो रास्कल्स हैं उनके लिए रहती है क्योंकि वो इस भौतिक जगत में कैसे खुश रहें और अपने परिवार को कैसे पालें सिर्फ इसमें ही बिजी रहते हैं Yeah. Rascal means dusht, right? Dusht. यस प्रभु यस प्रभु Dusht. I know something. Hare Krishna. So, so you see, when we are connected with Krishna, then we are not worried about ourselves. But ISKCON, it is preaching organization, so it is natural to be worried about those who are here in samsara, to be worried and to have desire to make them free from samsara. तो हम जैसे इस्कॉन में हैं तो हम वैसे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम खुद की तो चिंता इतनी नहीं करते हैं पर क्योंकि इस्कॉन सभी लोगों के लिए है तो हम दूसरों लोगों के लिए भी चिंता करते हैं कि वो लोग कितने परेशान हों Because it is the part of our spiritual life, spiritual practice, sadhana, that we are trying to preach, we are trying to spread this message given by Srila Prabhupada. तो ये हमारा प्रचार का एक बहुत अहम हिस्सा है कि हम दूसरों के लिए भी जो है चिंता करें और ये प्रभुपाद जी का एक बहुत अहम उनकी मूवमेंट का बहुत एक अहम हिस्सा है It is not that we are great preachers, but we are just repeating after Srila Prabhupada what he has told in his books, and sometimes it works. Sometimes we can act like good instruments in the hands of Krishna, in the hands of spiritual master. तो कभी-कभी हम लोग हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके हाथों का हम एक इंस्ट्रूमेंट बन सके और ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं वो सारी चीजें श्रील प्रभुपाद के द्वारा बोली गई हैं हम उसी को दोहरा रहे हैं And because devotees, they want to help conditioned living entities, they want to help them
to terminate their material life, material existence. Because of that, we glorify Vaishnavas in famous Vaishnava Pranama mantra in particular way. और जो भगवान के भक्त होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी चिंता करते हैं, तो इसलिए हम उनकी जो है ग्लोरी को या कह सकते हैं उनकी गाथा को दोहराते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और उनके भजनों के द्वारा। And we're saying Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sinubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. And Patitanam Pavanebhyo means that devotees are full of compassion for the fallen souls. तो ये जो प्रणाम मंत्र है भक्तों के लिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, तो इसमें जो पतितानां पावनेभ्यो है, ये इसका मतलब है कि दूसरों के लिए दया होती है भक्तों के अंदर। And what does it mean that a devotee manifested his compassion in our life? It means he has helped us in our spiritual journey in particular way. Maybe he gave advice, maybe he has shown inspiring example of his own conduct, whatever. तो और वो हेल्प कैसे करते हैं, वो दया कैसे दिखाते हैं कि वो जो है अपना उदाहरण देते हैं, अपने मतलब उन एक इंस्पिरेशन देते हैं, उदाहरण देते हैं अपना, उसको करके दिखाते हैं, आचरण में लाते हैं और उसके थ्रू हम लोग सीख सकते हैं। Because you see, we are in Vaishnava society, and it means that our success in spiritual life doesn't depend on mercy of Srila Prabhupada only or mercy of spiritual master only, but it depends, it is combined phenomena, combined mercy which we want to get basically from everywhere, from any Vaishnava. So जो हम इस्कॉन में हैं, तो हम लोग सिर्फ श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज की ही कृपा नहीं चाहिए, हमें सभी वैष्णवों की कृपा चाहिए। We want to get this mercy from each and every Vaishnava. That's why we sometimes approach devotees and we ask them to bless us. तो इसीलिए हम लोग भक्तों के पास जाते हैं, हर एक भक्तों के पास जाते हैं और उनसे अपने लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। So it is natural to be grateful to all the devotees that had played role in our spiritual journey. Someone helped a lot, someone helped a little bit, but each and every contribution, their contribution to our spiritual success is important. तो हमारे ये जो अध्यात्म की जो जर्नी है, उसमें कई डिवोटीज ने हेल्प किया है, किसी ने कुछ ज्यादा मदद की होगी, किसी ने कुछ छोटी मदद की होगी, लेकिन हर एक भक्त ने कुछ ना कुछ मदद हमारी जरूर की होगी। And we are going to the next letter, to the letter which means understanding. तो अब हम दूसरे लेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अंडरस्टैंडिंग। Understanding. So what we have, what actually we want to understand by reading scriptures, by reading Srila Prabhupada's books. Here in Bhagavad Gita, verse 16.24, it is explained. The explanation is given. तो हमें जो शास्त्र से क्या समझना है, वो यहाँ भगवद गीता के श्लोक में बताया गया है, 16.24 में। So here, Krishna says, one should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हर एक को समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा कर्तव्य क्या नहीं है, और इसको शास्त्रों के माध्यम से हमें जानना चाहिए। और ऐसे अगर हम नियमों का जानेंगे तो वन शुड एक्ट सो दैट ही कैन मे ग्रेजुअली बी, हाँ, तो अगर हम ऐसा जानेंगे और तो फिर हम लोग अपनी आध्यात्मिक जगत, अपनी आध्यात्मिकता में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। So basically it means what? It means that Shastra tells us what is good and what is bad. तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि शास्त्र हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। What is permitted and what is prohibited. तो क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमें बताते हैं।
And someone can tell us, but what about freedom? Freedom means I do whatever I like. Why we have these restrictions given by Shastra? तो कोई कह सकता है कि भाई हमारी फ्रीडम का क्या, हम जो चाहे वो करें, तो ये रूल्स और रेगुलेशन क्यों, ये नियम पालन क्यों? And and the answer is that these rules actually lead to freedom. और उसका आंसर ये होगा कि ये नियम एक्चुअल फ्रीडम में को प्रमोट करते हैं। These rules make one free from samsara gradually, but make one free from samsara. तो ये रूल्स फॉलो करने से हम इस भौतिक जगत से फ्री होंगे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लेकिन फ्री होंगे। But if someone wants to remain in samsara, then he can create his own rules and he can follow his own rules and he can live whatever he likes. पर अगर कोई इस भौतिक संसार में ही रहना चाहता है तो वो अपने रूल्स बना सकता है, अपने हिसाब से ही फॉलो कर सकता है। Krishna gives the instruction how to act if you want to get out from samsara, and then he tells Arjuna, now you have got this knowledge, now you act according to your desire. It is up to you to take the decision what you are going to do. तो भगवान अर्जुन को ये चीज बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि अब आपको जो है दुनिया को बताना है कि दुनिया से कैसे मतलब इस भौतिक जगत से कैसे निकलना है। And basically, if this spiritual message is delivered properly, in proper way, then naturally any intelligent human being will come to the conclusion that it is better to follow. और अगर कोई इसको सही में वास्तव में समझेगा और कोई इतना समझदार हो पाएगा तो वो यही सोचेगा कि इन नियमों को ज्यादा अच्छा है कि इन नियमों को पालन किया जाए। So Shastra tells us, gives the understanding about how to live and how to live, means how to live this material world. तो शास्त्र ये बताते हैं कि रहना कैसे है और छोड़ना भी कैसे है संसार को, संसार में रहना और छोड़ना दोनों। So in Srimad Bhagavatam, in one of purports, it is written, real religion means to know God, our relationship with Him, and our duties in relation with Him, and to know ultimately our destination after leaving this material body. तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में बताया गया है कि असली में धर्म का मीनिंग क्या है, भगवान को जानना और हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है और हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं उनसे ये रिश्ता निभाने के लिए, और अंततो गत्वा इस भौतिक जगत को हमें कैसे छोड़ना है। Such kind of understanding Shastra gives to any sincere reader. I'm sorry, Prabhuji, just a network issue. Can you please repeat? Such kind of understanding Shastra gives to any sincere reader. और ऐसा जो सिंसियर कोई रीडर होगा जो वास्तव में इनको पढ़ना चाहेगा तो शास्त्र उसको ये मतलब समझाते हैं। Who is Krishna? What are my relationships with Krishna? And what do I have to do? And where I will go after this life? तो कृष्णा कौन है, मेरा उनसे क्या रिलेशन है और मैं कहाँ जाऊंगा इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद। Usually people, when they join spirituality, they are quite disappointed, bewildered. They don't have answers on these basic questions. Who am I? What to do? What is my future? Like this. तो जब लोग यूजुअली आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख होते हैं तो उनको ये बेसिक क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ या मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। So if sincerity is there, then a person will be able to accept the answer on these questions that is given by Shastra. तो अगर सिंसेरिटी रहेगी, दृढ़ता रहेगी, तभी जाके कोई समझ पाएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है और इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। Читание Чаритамрита отделила 7.146. It says that knowledge, Vedic knowledge, is divided in three parts: Sambandha, Abhideya, and Prayojana.
तो चैतन्य चरितमृत का ये जो 7th चैप्टर का श्लोक है, तो इसमें बताते हैं कि 3 तरह के ज्ञान है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। So, Sambandha means our relationship with Supreme Personality of Godhead. It is written on the screen. Abhideya means activities in terms of that relationship, and Prayojana means ultimate goal of life. तो संबंध का मतलब है कि हमारा क्या संबंध है भगवान से। अभिधेय का मतलब है कि उस संबंध में रहते हुए हम क्या काम करेंगे, मतलब भगवान के लिए क्या वो करेंगे। और प्रयोजन का मतलब है कि अंततोगत्वा हमारा क्या गोल होना चाहिए। So, this part of Vedic knowledge, which we call Sambandha, it answers on the question how everything is arranged. तो जो संबंध के बारे में है, तो वो ये सब चीजें बताता है कि कैसे हर चीज आपस में अरेंज्ड है। Prayojana means what is the goal of life, means what should I try to achieve. तो प्रयोजन का मीनिंग है कि हमारा अंतिम गोल हमारा क्या होना चाहिए, हमको क्या चीज को हमें पाना है। And Abhideya means what should I do in order to achieve this goal of life. और अभिधेय का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करें कि उस जो अल्टीमेट गोल है प्रयोजन, उसको पालें। Such kind of understanding one can get by reading Srila Prabhupada's books. तो इस तरह का जो सोच है, इस तरह की हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को, पुस्तकों को पढ़ेंगे। And we are going to the next letter R, R, which means resolution. तो अब हम अगले लेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आर, रेजोल्यूशन। Resolution means we want to resolve problems and troubles of our life. तो रेजोल्यूशन का मतलब है कि हम लोग अपने जो अ, इस भौतिक जगत में जो हमारे दुख हैं, उनका हम निवारण करना चाहते हैं। Of course, resolution and understanding are interrelated, because if you understood what to do and how everything is arranged and so on, then naturally many doubts doubts and misunderstanding are solved. तो अंडरस्टैंडिंग और रेजोल्यूशन का आपस में कनेक्शन है। तो अगर हम समझेंगे कि हमें क्या करना है, तो हमारा काफी हद तक डाउट क्लियर हो जाएगा कि अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। So we can read just 2 verses from Bhagavad Gita. The first one, where Arjuna is telling to Krishna about his bewilderment, and the last one where he tells that now everything is clear for him. तो हम देख सकते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन 2 श्लोक बोलते हैं शुरुआत में, जहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बाद में वो कहते हैं कि अब मुझे सारा चीज क्लियर हो चुका है। Karpanya dosha pachata svabhavach, prichhami tvam dharma samudha chetach, et shreyach syan nischitam bruhitan me, shishyasteham shadhi mam tvam prapanam. Now I'm confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I'm asking you to tell me for certain what is best for me. Now I'm your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो भगवान अर्जुन भगवान से यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, और मुझे अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करिए, और मैं फुल्ली जो है आपको सरेंडर हो चुका हूँ। तो मुझे अब आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। Shishyasteham shadhimam tvam prapanam. Shishyasteham means I'm your disciple. तो यहाँ पे चौथी लाइन में शिष्यस्तेहम सधीमाम त्वम प्रपन्नम लिखा है। तो शिष्यस्तेहम का मतलब है आई एम योर डिसाइपल, मैं आपका जो है शिष्य हूँ। And shadhi means instruct me. शादी मीन्स मुझे आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। Shadhi mam tvam prapanam means instruct me. I'm yours. Tvam means I'm yours. Prapanam, I surrender to you. Tvam prapanam, I surrender to you. Shadhi, and because of Tvam prapanam, I am surrendered unto you. Because of that, Shadhi, instruct me. तो त्वम प्रपन्नम इसका मतलब मैं आपको सरेंडर हूँ
और शधी का मीन्स है इंस्ट्रक्शन दीजिए, तो मैं आपको सरेंडर्ड हूँ, इसलिए आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। So it is quite important to have this mood of surrender before taking instructions. Otherwise, we will just get some more interesting information for our mind, but it is not guaranteed that we will be having determination or inspiration to follow. तो शरणागत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बस इंफॉर्मेशन ले लेंगे और हम उस तरह से उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। Here, Arjuna he tells to Krishna, "Tell me for certain what is best for me." तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान को कि आप बताइए कि मेरे लिए सबसे उत्तम क्या रहेगा। It means that Arjuna has faith, has vishwas, that Krishna knows what is best for him. तो अर्जुन को पता है, तो अर्जुन को विश्वास है भगवान पर कि उनको पता है कि मेरे लिए सबसे उत्तम क्या रहेगा। So if someone has such faith, then there is use to ask the questions. If we have trust in particular source from which we want to get knowledge. तो हम जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर हमें वहाँ विश्वास होगा तभी इसका असर होगा, नहीं तो नहीं। That's why it is recommended, and Srila Prabhupada he was telling many times that a disciple should feel himself before his spiritual master as a full number one. तो इसीलिए एक शिष्य को जो है अपने गुरु के सामने ऐसा समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। Full number one means he knows what is best for me, and I don't know what is best for me. तो सबसे बड़ा मूर्ख का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे गुरु को पता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। Of course, I can be qualified from materialistic point of view. I can have some material qualification, but if we are speaking about spiritual qualification, then it is natural for a disciple. It is natural to think that his spiritual master is more qualified spiritually than himself. तो अगर हम भौतिक क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो हाँ, हम शायद उतनी क्वालिफिकेशन हो सकती है हमारी, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक तौर पे बात करेंगे तो हमारी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु गुरु की क्वालिफिकेशन है। So here Arjuna is in quite difficult situation where there is no material solution for this situation, that he has to fight on Kurukshetra battlefield, but at the same time he doesn't have determination and he doesn't know what is his duty. So there is no material solution. That's why he is asking Krishna to give the solution, spiritual solution for material problem. सो यहाँ पे जो है अर्जुन समझ जाते हैं कि इसका कोई भौतिक जो है सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन स्पिरिचुअल ही है, अध्यात्म ही है। तो वो फिर कृष्णा से पूछते हैं कि इसका जो है आप मुझे सोल्यूशन बताएं, तो इसका सोल्यूशन आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। And Krishna gradually, during all this Bhagavad Gita, 18 chapters, he is clarifying all the situation for Arjuna, and he explains who Arjuna is. From the very beginning, from the second chapter, he explains that Arjuna is eternal spiritual soul, for example. तो कृष्णा बताते हैं कि अर्जुन को कि वे कौन है, वो एक जो है आत्मा है। तो ये पूरे भगवत गीता में पूरे 18 चैप्टर्स में भगवान ऐसे धीरे धीरे करके अर्जुन को समझाते हैं। But it is not sufficient just to understand that we are eternal spiritual souls, because impersonalists, they also think like this, that we are eternal. It is not sufficient. It is very important to understand that we are not just eternal living beings, but we are eternal servants of Krishna. तो सिर्फ यही जान लेना बहुत नहीं है कि हम लोग सिर्फ आत्मा हैं और हम अमर हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के दास हैं। Otherwise, this situation is not clear. I am eternal, but what do I have to do? I exist eternally, and
But I don't know what is my role. But Bhagavad Gita gives the answer on this question. What is our role? Our role is that we are parts and parcels of Krishna, and our mission, our predestination is to satisfy Krishna, who is source of everything. तो हाँ, एक आत्मा के तौर पे क्योंकि हम अमर हैं, तो हम कभी कभार ये हो सकता है कि हम दुविधा में आ जाए कि हम क्या करें। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है। So in Bhagavad Gita there is particular example where Arjuna was asked to fight and finally he agrees to fight and he responds to Krishna in particular way according to the shloka which you can see on the screen. तो अभी ये जो श्लोक देख रहे हैं, ये वो श्लोक है जहाँ पे अर्जुन अग्री करते हैं, मानते हैं, वो मतलब युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। Arjuna said, "My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and I am prepared to act according to your instructions." तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि ओ कृष्णा, अब मेरा जो है मोह दूर हो चुका है और अब आपकी कृपा से मेरी जो बुद्धि है वो अब सही हो चुकी है और अब मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है और अब मैं आपके जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अनुसार मैं चलने को तैयार हूँ। And of course, it is important that he is mentioning about memory that he have regained, because it is the essence of our existence, our ability to remember who we are and what to do. तो यहाँ पे मेमोरी बहुत जरूरी है क्योंकि यही बताती है कि हम जो है पहले भी एग्जिस्ट करते थे और अभी भी हैं। Otherwise, sometimes people they can go through car accident, and sometimes in car accident one's brain can be damaged to such extent that such person doesn't remember who he is, what to do, what is his position. So basically his human existence is finished at this moment. His existence, like existence of intelligent living entity, is finished. That's why it is important. I'm giving this example just to explain that it is important to remember some essential things regarding our life. तो जैसे कि कार एक्सीडेंट में अगर है और हमारी जो है दिमाग को चोट लग जाती है, तो कोई इंसान भूल सकता है और उसकी जो है एग्जिस्टेंस को ही खतरा आ सकता है। तो वो भूल जाएगा कि मैं क्या था, क्या हूँ और मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे जो मेमोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। And we are going to the last letter E, which means empowerment. तो अब हम लास्ट लेटर की तरफ जा रहे हैं जो कि है ई, एम्पावरमेंट। So Shastra is not just for our pleasure, for our reading, but it is also meant for us to share this knowledge with others. तो ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए ही नहीं है शास्त्र, ये इसलिए भी है कि हम लोग शेयर भी कर सके दूसरों को। That's why ISKCON devotees, they distribute Srila Prabhupada's books. तो इसीलिए इस्कॉन में जो भक्त हैं वो श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को जो है वितरण करते हैं। So here on this verse which you can see on the screen, it is written that Sri Chaitanya Mahaprabhu empowered Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami with the nectar of his mercy to carry out this work in Vrindavana. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जो है एम्पावर किया, यानी शक्ति दी और अपनी कृपा दी ताकि वो वृंदावन जाके आगे काम कर सके। And what kind of work is mentioned? The work was that Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, they had to discover these places in Vrindavana, places where Krishna manifested his pastimes. और ये काम क्या है जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिला है? ये काम है कि वृंदावन में जाके भगवान ने जहाँ-जहाँ पे लीलाएं की हैं, उन जय स्थानों को खोज निकालना। These pastimes took place 5,000 years ago, and now
in Rupa Goswami's times, in Sanatana Goswami's times, there was just jungles on the place of Vrindavana. तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो 5000 साल पहले हुई थी। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जो है वो लीलाएं का स्थान खोज के निकालना था। Did you tell about jungles? यस, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब उनका समय था तो वृंदावन में सिर्फ और सिर्फ जो है जंगल ही थे। Okay. So, and because of these jungles, no one could understand where and which pastime took place. And by mercy of Rupa Goswami, Sanatana Goswami, who have spiritual vision to understand what is going on and where it is going, because of them and by mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, these places were discovered again. तो ये जो स्थान है ये ऐसे डिस्कवर हुए क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास जो है आध्यात्मिक चक्षु थे। तो उससे और जो भगवान ने जो उनको कृपा दी थी श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उससे फिर इन स्थानों की खोज हुई। So it is the process of empowerment. Someone who is senior, he is asking those who are below, those who are junior, to do something. And if juniors, they submissively take this instruction, then they also take mercy, by which, by power of this mercy, they are able to fulfill, to execute this order. तो जब सीनियर कुछ कहते हैं तो जो अगर जूनियर हैं तो वो शरणागत होके अगर उस इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं तो फिर जो है ये चीजें उनको समझ में आएंगी। And the same way, Srila Prabhupada, he also was asking for mercy and for empowerment to distribute, to preach this Krishna consciousness all over the world. He was asking for this mercy from each and every member of our Shri Guru Parampara. And he was asking Krishna, of course, also. तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी जो है कृपा की याचना कर रहे थे हर एक जो है हमारी गुरु परंपरा के आचार्य से और कृष्णा से भी। So we have this famous bhajan, which is called Markine Bhagavata Dharma, or Preaching Krishna Consciousness in USA. And this bhajan was written in Bengali language by Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो ये एक बंगाली भजन है जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ने लिखा है और ये जो है यूएसए जब वो गए थे तब का है। How will I make them understand this message of Krishna consciousness? I'm very unfortunate, unqualified, most fallen, therefore I'm seeking your benediction, means benediction of Krishna, so that I can convince them, for I am powerless to do so on my own. Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure as you like. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो भजन लिखा है तो इसमें वो ये बोल रहे हैं कि मैं कैसे उनको जो है कृष्ण भावनामृत का जो है मैसेज मैं कैसे उनको दूंगा। मैं तो बिल्कुल ही अभागा हूँ, मैं बिल्कुल ही अनक्वालिफाइड हूँ और सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं आपकी जो है ब्लेसिंग मांग रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, ताकि मैं जो है यूएसए में जो जा रहे हैं प्रभुपाद तो उनको मैं कन्विंस कर पाऊँ, उनको मना पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है। और दूसरे में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समहाउ और अदर ओ लॉर्ड, यानी कैसे ना कैसे करके भगवान आपने मुझे यहाँ पर ला दिया है आप अपने बारे में बोलने के लिए, और भगवान अब आपके पास ही अब आप पर ही है कि आप मुझे सफल करें या विफल करें, जैसे आपकी इच्छा। O spiritual master of all the worlds, I can simply repeat your message. So if you, Vivek Patel, he raised his hand. Prabhuji, questions you can ask later on. Okay, we will have time for that. Don't worry about this. O spiritual master of all the worlds, I can simply repeat your message. So if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. Only by your causeless mercy will my words become pure.
I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel gladdened and thus become liberated from all unhappy conditions of life. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कृष्णा को कह रहे हैं जगत गुरु यानी जगत के गुरु, और वो ये कह रहे हैं कि मैं साधारण सिंपली मैं आपका जो है जो मैसेज है मैं वही जो है दोबारा बोलने जा रहा हूँ। तो मेरे जो मैं जब बोलूंगा तो मुझे ये शक्ति दीजिएगा कि यू कैन मेक माई पावर स्पीकिंग सूटेबल फॉर, हाँ, तो जब मैं बोलूंगा तो वो जो है समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये उन्होंने कृष्णा से मांगा, मतलब कृष्णा से प्रार्थना की। और दूसरे उसमें वो क्या लिखते हैं, ओनली बाय योर क्रॉसेस मर्सी विल माय वर्ड्स बिकम प्योर। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपकी कृपा के द्वारा ही जो है मैं अगर कुछ बोलूंगा तो वो शुद्ध हो पाएगा, आपकी कृपा के द्वारा ही ये होगा। और आ, और वो ये बोल रहे हैं कि जब मैं ये मैसेज जो है बोलूंगा तो उनके जो है हृदय में जो है ये मैसेज जाएगा, और वो जो है बहुत खुश होंगे या फिर अपने आप को बहुत जिसे बोलते हैं आनंद में महसूस करेंगे, और वो जो है मुक्त हो जाएंगे, जिसे बोलेंगे भौतिक जगत में जो भी दुख हैं उनसे वो मुक्त हो जाएंगे। Oh, very nice, very nice. And this part is very, very famous. Oh Lord, I am just like a puppet in your hands. So if you have brought me here to dance, then make me dance, oh Lord, make me dance as you like. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये सबसे फेमस है, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि मैं आपके हाथ में सिर्फ एक कठपुतली हूँ और आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं, तो आप जैसे नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगा। So this prayer was written in September of 1965 in America. तो ये 1965 में लिखी गई थी अमेरिका में, And it can be found in our ISKCON songbook. It is there. तो ये हमारी जो इस्कॉन की सॉन्ग बुक है उसमें भी आपको ये मिल सकता है। So you see, even Srila Prabhupada, we consider Srila Prabhupada to be the most powerful, the most empowered, the most pure, the most Acharya. Still he is praying to Krishna, to his spiritual master also, to everyone, to give him this empowerment. तो हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद कितने शुद्ध हैं, कितने मतलब वो एक शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कृष्णा से और अपने गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उन्हें शक्ति दें करने आगे प्रचार करने के लिए। So you see, the same way book distributors, they also pray to Supreme Lord that he could send them some sincere souls to take books, and that Supreme Lord could give them some power or intelligence to preach in such way that people would take books from them. तो जो पुस्तक वितरण भी करते हैं तो वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी उन्हें आशीर्वाद दें, ताकि जो है जब वो लोगों के पास जाएं तो वो उन्हें कन्विंस कर सके या मना सके कि आप भी पुस्तक लें और पढ़ें। So this mood of dependence, this mood that we depend on Supreme Lord, is very important for spiritual life. तो ये जो शरणागति का जो मूड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक जगत में, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। And if we are engaged in preaching activities, then it is quite easy to practice this mood because it becomes part of your life. Before going on preaching, you are asking Supreme Lord to give you some intelligence, some mercy in order to preach better. तो और जो प्रचार करते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमें प्लीज कुछ बुद्धि दीजिए, कुछ कृपा दीजिए ताकि हम कुछ प्रचार कर सकें। And then this process works. और फिर जो है ये पूरा जो है प्रोसेस वर्क करेगा, यानी फिर ये पूरा हमें समझ में आएगा और ये एक्चुअल में काम करता हुआ दिखेगा। And also these prayers that make us feel helpless without Krishna's mercy, these prayers are important because it is our protection from our own
ahankar, from our own false ego. तो ये जो प्रार्थना है जिसमें पूरी डिपेंडेंस शरणागति कृष्ण की ओर जताई जाती है, तो ऐसी प्रार्थना से हमारा जो है अहंकार है वो भी भंजन होता है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Because if someone will be trying to preach without these prayers, and if some success will come in this preaching work, some success will come in his life by Krishna's mercy, but if these prayers are not here, then very easily person becomes puffed up and he feels himself that I'm great preacher just because of myself. तो अगर ये प्रार्थनाएं नहीं होंगी कृष्ण से और कृष्ण की कृपा से अगर हमारे प्रचार में कुछ अच्छा भी हमको रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर हम ये समझेंगे कि हमारे मतलब अहंकार में वृद्धि होगी और हम ज्यादा ये समझेंगे कि मेरी वजह से ही जो है ये प्रचार हो रहा है। So here in this prayer, Markine Bhagavata Dharma, Srila Prabhupada, who is founder Acharya, he is Acharya. Acharya means one who is giving example. So he gives example how to pray. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें किस तरह से, एक उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से हमें कृष्णा से प्रे करना चाहिए। Mhm. And we are going to the next and to the last quote for today. And it is from Chaitanya Charitamrita Adi Lila 9.41 purport, where Srila Prabhupada writes that every Indian citizen, each and every person from India, he has a duty to preach Krishna consciousness. तो ये चैतन्य चरितमृत आदि लीला का जो ये परपट है 9.41 जो 9.41 है, तो इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये भारत के जो लोग हैं उनको हर एक को प्रचार करना चाहिए। So we will just read this quote and then we will go to your questions. Anyone who takes birth in the land of India, Bharatavarsha, has the special privilege of being able to take advantage of the instruction and guidance of the Vedic civilization. He automatically receives the basic principles of spiritual life for 99.19% of the Indian people, even simple village farmers and others who are neither educated nor sophisticated, believe in the transmigration of the soul, believe in past and future lives, believe in God, and naturally want to worship the Supreme Personality of Godhead or His representative. These ideas are the natural inheritance of a person born in India. They merely need to be a little more educated in the Vedic principles. तो यहाँ इस परपट में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भी भारतवर्ष में यानी जैसे इंडिया बोला गया है, तो भारत में कोई भी जन्म लेता है तो वो बहुत ही जो है फॉर्चुनेट बोलेंगे उसको, बहुत ही भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेने का एक जन्म मिलने का एक एडवांटेज ये है कि वैदिक सिविलाइजेशन से हम टच में रहते हैं और अपने आप ही जो है स्वतः ही जो है आध्यात्मिक जगत के जो छोटे छोटे जिनको कह सकते हैं हम प्रिंसिपल्स, जैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और पिछले जन्मों का में यकीन करना कि हमारा पिछला जन्म था और आगे भी जन्म होगा, और भगवान में विश्वास करना, और अंदर से खुद ही एक फीलिंग आना कि हम भगवान की पूजा करें या उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी गुरु, उनकी पूजा करें, उनसे सीखें। तो ये आइडियाज जो है स्वतः ही एक इंसान में आती है जो इंडिया में रहता है, और उसको थोड़ा बहुत ही और वैदिक प्रिंसिपल्स पढ़ने की जरूरत रहती है, और ये जो पूरा फायदा है ये बताया गया है कि जो भारत में पैदा होता है। So here it is written that they means Indians, they need to be a little bit more educated in Vedic principles. So ISKCON can help with this very nicely. तो यहाँ पे दे लिखा हुआ है, दे यानी जो भारत के लोग हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ही जो है और पढ़ना पड़ेगा, जो है सीखना पड़ेगा वैदिक प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी वेदों में हमारे जो वैदिक कल्चर है उसके बारे में, तो उन्हें थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा और इस्कॉन इसमें मदद कर सकता है। Mhm.
Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu says here, Janma Sarthaka Kari Kara Para Upakara. If an Indian is educated in the Vedic principles, he is able to perform the most beneficial welfare activity for the entire world. This is not only the duty of Indians, but the duty of everyone, and we are very happy that American and European boys and girls are seriously cooperating with this movement. One should know definitely that the best welfare activity for all of human society is to awaken man's God consciousness or Krishna consciousness. Therefore, everyone should help this great movement. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने इस उसमें प्यार में कहा है, जन्म सार्थक करी करो उपकार। यानी जो अगर कोई भारत में रहता है और वो मतलब उसने पढ़ा है हमारे वेदों में क्या लिखा है उसको, तो वो जो है सबसे उच्चतम सामाजिक कार्य कर पाएगा पूरे विश्व के लिए। और ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही नहीं उनको अपनाना चाहिए, पर ये सबकी जो है सबका कर्तव्य बनता है। और श्रील प्रभुपाद उस समय लिख रहे हैं कि वो बहुत ही खुश हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं, जो यानी अमेरिका और ऊपर यूरोप के लड़के लड़कियां हैं, वो भी जो है इस जो है पूरे मूवमेंट को बहुत ही जो है सीरियसली ले रहे हैं। और ये एक हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि जो सबसे श्रेष्ठतम सामाजिक कार्य है एक मानव जाति के लिए, वो ये है कि भगवान कृष्ण भावनामृत जो है वो अवेकन करे। यानी किसी भी इंसान में जो कृष्ण भावनामृत निहित है उसको जो है जगाएं। और ऐसे तो इसीलिए सबको इस जो है मूवमेंट में मदद करनी चाहिए। So this last statement, therefore everyone should help this great movement, this statement is very important. तो ये जो लास्ट के जो लाइन है, therefore everyone should help in this great movement, मतलब सभी को इस मूवमेंट में मदद करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Because, dear friends, how this process of empowerment works? This process works in such way that we are asked to do something by saintly person. Saintly person is asking us to do something, and if we follow, then we get his mercy. But at this moment when he is asking means he is empowering us to do something. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एम्पावरमेंट दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई सीनियर हमसे कह रहे हैं या फिर जो कि बहुत आध्यात्मिकता के तौर पे हमसे काफी ऊंचे लेवल पे हैं, तो वो हमसे अगर कुछ कह रहे हैं तो वो हमें एम्पावर कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो हमें एम्पावर कर रहे हैं। It means that just by writing this statement that everyone should everyone should help this great movement. It means just automatically, just by writing this statement, Srila Prabhupada gives empowerment to each and every reader of this book. तो ये एक लाइन लिखने से ही श्रील प्रभुपाद ने सभी के लिए लाइन लिखी है, तो एक लाइन लिखने से ही श्रील प्रभुपाद ने अपनी कृपा जो है सभी को जो है दी है। And of course he writes that to help better one should become a little bit more educated in Vedic principles. और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को जो है, जो हमारे शास्त्र में जो लिखा गया है उसमें जो है सभी को पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, वेदों में क्या लिखा गया है। So Srila Prabhupada, he empowers us to help this movement. He was many times he was asking to read his books, to read Srila Prabhupada's books. So in such way we can become educated and we can help this movement nicely. And it will be, like it is written here in the first paragraph, it will be the most beneficial welfare activity for the entire world. तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जो है हमें इन पुस्तकों को पढ़ना है, और जो है हम इन पुस्तकों को जब पढ़ेंगे तो हम पूरे जो है क्या बोलते हैं मानव समाज है उसकी हेल्प कर पाएंगे और करनी चाहिए। So you please pay attention that Srila Prabhupada wrote here in this purport that each and every Indian, he has natural inheritance for these ideas, Vedic ideas.
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि स्वतः ही जो भी भारतीय है स्वतः ही उसमें ये चीज आती है कि वो वेदों को में क्या है उसको जाने और पढ़े। Because you see, in his pranama mantra, it is said, Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Desha Tarine. It means he is about to save Western countries from ideas or from conceptions of Nirvishesha and Shunyavada, means from impersonalism and philosophy of and voidism, philosophy of void. तो श्रील प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने, तो उसमें ये बताया गया है कि जो है श्रील प्रभुपाद क्या करेंगे, पाश्चात्य जगत में जो निर्विशेषवादी हैं, जो शून्यवादी हैं, उनको जो है उनका उद्धार करेंगे। And I can confirm that outside India, for some people, it is really quite difficult to accept this idea that soul can transmigrate, that there are past and future lives like this. For और some people, it is really difficult to grasp these ideas. और प्रभु जी अपने अनुभव से बता रहे हैं कि इन भारत से बाहर लोगों को बहुत मुश्किल होती है इसे मानने में कि जो है आत्मा जो है शरीर बदलती है और हमारा पूर्व जन्म भी होता है और हमारा अगला जन्म भी होगा। Of course, this Vedic knowledge, this Indian knowledge becomes popular, and vegetarianism becomes popular, and the conception of karma becomes popular all over the world gradually. Also because of endeavors of ISKCON, and because of that, gradually these ideas it becomes easier for people to accept these ideas. But anyway, Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Shtarine. It is true, Western countries, they have to be saved from this impersonalism. तो इस्कॉन की जो है सहायता से जो है सभी को मदद मिल रही है, वो धीरे धीरे करके जो है आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड जो sorry Prabhuji, what was the last part? I'm saying that Western countries should be saved from impersonalism philosophy. या तो जो बाहर की जो और भी कंट्रीज हैं वो जो है ये शून्यवाद और जो है उससे बची रहेंगी, निर्विशेषवाद शून्यवाद, तो इससे बचाना भी दूसरी कंट्रीज को बहुत जरूरी है। So that's why Srila Prabhupada came to United States of America, and he was preaching Krishna consciousness, and he established ISKCON. तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बाहर गए, अमेरिका गए और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की ताकि वो ये निर्विशेष और शून्यवादी इन सब लोगों को जो है वैदिक धर्म के बारे में बता सके और कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को जो है प्रचार कर सके। Srila Prabhupada ki jai. श्रील प्रभुपाद की जाए। Srila Prabhupada ki jai. Now let's go to your questions. ओके, तो अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। But where is Dhruv Prabhuji? Where is he? Dhruv. Huh? ध्रुव प्रभु जी Yeah, किधर है? Dhruv. Where is Dhruv? Where is Dhruv? ध्रुव किधर है प्रभु जी? Yeah. So what is the answer on this question? Gaurav, do you know where is Dhruv or not? Sorry प्रभु जी, I don't see Dhruv in this meeting. He is not here because we decided that he will save the history of the chat and we will answer the questions from yesterday, and now he is not here, so how we can answer on these questions? You see? Yes Prabhuji, I have That's the question. I have the screenshot. You yesterday. have. Very nice, very nice. Then let's take question of Vivek Patel, and then let's go through this chat history. Vivek, please ask your question. Yes Prabhuji, I'm unmuting you.
Мгм. Харибол. हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। Харе Кришна Прабhu. I cannot see you. Where are you? आई एम फाइन। No, no, no. Where are you? Where are you? I cannot see you. Please switch on the camera. ओके ओके ओके। If you can, if you can. Oh, Haribol, Hare Krishna. Nice to हरे see you. कृष्णा। नाइस What's टू your सी यू। question? What is your My question? question is my memory is the has a negative force in the immediately. So I am Hare Krishna chanting is the Mhm, compulsory is a count, but I'm not. I'm comfortable. I'm not memory into positive. mhm. I think I'm not and my memory in the not positive. So is the question is I'm not sure that I understood your question. Maybe Gaurav can help me. विवेक प्रभु आप हिंदी में मुझे बता दीजिए, मैं इंग्लिश में बता दूँ। ओके। प्रभु जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं अभी क्या है, मैं हरे कृष्णा जप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ और इस्कॉन भी जाता हूँ वीकली में एक बार। पर हर बार मुझे नेगेटिव थॉट ही आते हैं और जो ज्यादा विचार आते हैं, थॉट आते हैं, नेगेटिव आते हैं और मुझे काम में मन नहीं लगता, इधर रहने में मन नहीं लगता। तो वो सब हो रहा है, तो उसका मैं सोल्यूशन कैसे लाऊं? मैंने काफी प्रभु से बात भी करता हूँ, फिर भी जब भी मैं कृष्णा मंदिर जाता हूँ, हरे कृष्णा जप करता हूँ, डांस करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ रहता है अंदर अंदर ही अंदर कि मैं हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पाता हूँ। Yes, so Pruji, he is asking that he goes to the temple, he also chants also, Uh-huh. but and he dances on the kirtan as well, does all things, but he has still has negative thoughts and he's thinking way too much. He has asked Uh-huh. from from seniors as well, but like he is not getting the happiness. So what is that solution? Happiness? What kind of happiness he wants to get? I don't understand. विवेक प्रभु वो पूछ रहे हैं कि आपको मतलब किस तरह का, जैसे आप हैप्पीनेस बोल रहे थे, तो क्या हैप्पीनेस चाहिए आप? प्रभु जी मुझे हैप्पीनेस यानी कि भगवान प्रेम के अंदर हैप्पी होने का, जो जैसे कि मैं कीर्तन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, पर अंदर ही अंदर में ऐसा होता है कि ब्रेन माइंड से मैं हैप्पी नहीं हूँ, अंदर से मैं हैप्पी नहीं हूँ। पर कीर्तन करता हूँ, मजा भी फोकस से करता हूँ, फिर भी अंदर से हैप्पी नहीं हूँ। कुछ ना कुछ सोचने में बहुत ज्यादा खुश जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ, तो उसके कारण मुझे कहीं समझ में नहीं आता क्या करूँ। विचार बहुत ज्यादा आते हैं मेरे अंदर। Okay. So Pruji, he is saying that externally he is doing, but Uh-huh. internally he is thinking way too much always. Ah, Yeah. so the situation is about overthinking, right? Yes. Overthinking ना विवेक प्रभु, यही है ना? यस यस वही वही। Then I suggest you, Vivek Prabhuji, to order on Amazon, on Amazon books written by Gaur Gopal Prabhu, Gaur Gopal Das. One book is called Energize Your Mind, and another book is called Life's Amazing Secrets. आपको समझ में आया विवेक प्रभु? बहुत थोड़ा थोड़ा आया मुझे। वो कह रहे हैं Torah. कि गौर गोपाल प्रभु जी की बुक है एनर्जाइज योर माइंड, Energize Your Mind, and another is Life's Amazing Secrets. और दूसरी एक बुक है कि लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। ये दो बुक है प्रभु जी बोल रहे हैं, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप इनको पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा मे बी आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। And पढ़ा as far as I remember, he covers this topic of overthinking and other things, some kind of psychological things he describes from spiritual perspective. प्रभु जी बोल रहे हैं कि उस बुक में, गौर गोपाल प्रभु जी की जो बुक है, उसमें प्रभु जी ये चीजें कवर करते हैं, ओवर थिंकिंग और साइकोलॉजिकल जो है ये, मतलब स्क्रिप्चर्स के थ्रू, मतलब शास्त्र के थ्रू ये टॉपिक्स कवर करते हैं, तो Because, वहां से आप पढ़ सकते हैं। because you see, in order to give good answer on your question about overthinking, I have to give one more class on overthinking. It is a long story. Better to read the book. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई एक क्लास पूरी देनी पड़ जाएगी अगर ओवर थिंक के बारे में बोलेंगे, तो इसलिए वो बुक्स है, आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और एक मेरा और एक प्रश्न था कि मैं जब भगवत गीता पढ़ता हूँ 103 4 दिन तक पढ़ता रहूँ, तो मुझे
सारे श्लोक याद नहीं रहते, इसलिए मैं इस्कॉन जाता हूँ हर वीकली वो याद करने के लिए। फिर भी मुझे जितना समझ में आना चाहिए उतना समझ में नहीं आ रहा है। Prabhuji, he is Mhm, saying that he reads Bhagavad Gita, but mhm. he's not able to learn the shlokas. He even goes to the temple to learn them, but he wants to learn them, but he is not able to learn them. Why? Why? क्यों प्रभु जी? विवेक Q, प्रभु। Q, why? उसका मतलब ये है कि मैं कभी क्या है कि उसको समझ अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। कभी काफी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, अपनी लाइफ में उतार नहीं पाता हूँ जहाँ पे मुझे जरूरत होती है उस चीज की। जैसे कि मेरे फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स आती है तो तब मुझे उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। He is not able to implement the instructions given in the Bhagavad Gita. He's saying. But you are asking not about implementation of instructions. You are asking just how to memorize shlokas. To memorize shlokas, if one wants to memorize shlokas, one has to repeat shlokas again and again. It is one task. Basically, what we're discussing, what we're speaking about memorizing shlokas or about implementing knowledge. What is our topic? तो विवेक प्रभु मतलब दो अलग अलग चीजें हो गई, प्रभु जी बोल रहे हैं। एक श्लोका याद करने का हो गया और दूसरा हो गया कि इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि मैं जो भगवत गीता पढ़ता हूँ पूरा चैप्टर पढ़ता हूँ, तो उसके बाद कुछ कुछ चीजें मुझे याद ही नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ। दूसरे दिन पढ़ता हूँ थोड़ी चीजें याद है तो भूल जाता हूँ। तो वो चीज मुझे पूरी याद नहीं रहती है, और उसके बाद जो चीजें मुझे याद रहती है उसका मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता हूँ। so he is saying that he reads Bhagavad Gita, and then Mhm. once he reads, he forgets. And It is uh, natural, don't worry. It is natural. okay. You can take some notes. For example, you read something from Bhagavad Gita, and you can take short note that in such and such uh, purport I found something important for myself, and I can and you can write it in your notes. That here I found something important, and here also some important notes like this. समझ गए विवेक प्रभु या बता दूं? हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, तो आप नोट्स बना लीजिए और Something, उसको something, बार बार। something which I consider to be important, or something which I read it and I feel myself inspired, for example. So you can write down some points, and then you can open these notes and you can read it again. Also, you can take these notes with yourself everywhere, on walk or on job or in college or in university, whatever. And time to time you can open and remind yourself about what you have read. Okay. ठीक है विवेक प्रभु। Tike. ठीक है। Tike. थैंक्स है। Tike. Okay, so we have got something else in the chat. Anjana Jha. Anjana Jha is asking. Jha means that person is from Mithila, right? Jha, from Mithila. Sometimes we know that something is wrong, but because of our business, personal profile, we have to do it. How to balance it according to scripture? And I asked the person to give particular example, and I have got personal message, and in personal message it is written, sometimes I have to lie even after knowing or do something which gives me a guilty feeling. So how to balance it according to the scripture? Such question we have got. Prabhuji, would you like to translate the question? Okay, तो in Hindi, right? To other people. Well, usually we translate from English to Hindi, yeah. Yeah. Do, तो do, do you know some other languages? no, I was No? just clarifying. या तो Okay. अंजना जहाँ पूछ रहे हैं कि कभी कभी हमें पता होता है कि रॉन्ग है, कोई चीज रॉन्ग है हम जो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जॉब है या मतलब बिजनेस है या हम काम ही ऐसा करते हैं तो हमें वो करना पड़ता है। तो इसको मतलब शास्त्रों से कैसे इसको देखे और इसको कैसे समझे या कैसे इसको सही कर सकते हैं? Well, Anjana Jha. Anjana Jha.
Well, you see, in Bhagavad Gita, in 18th chapter, we have very important verse about this. I will open this verse and I will show you this verse, where it is written that each and every action that we do in material world has some imperfections. Translate. Sorry, Prabhuji. I was actually looking something on the screen. Can you please repeat? Yes, of course I can. I'm saying that we have the answer on your question in 18th chapter of Bhagavad Gita. हाँ, तो अंजना जान, प्रभुजी कह रहे हैं कि जो इसका आंसर है वो 18th चैप्टर में है भगवद गीता के। So here in one of the verses it is written that each and every action that we do has some imperfections. तो इसमें भगवद गीता में लिखा है कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती ही है, इम्परफेक्शन होती ही है। It is verse 18.48, तो 18.48 है ये श्लोक, which you can see on the screen. Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, O son of Kunti, even if such work is full of fault. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है कोई भी काम जो है तो उसमें कमी होगी ही होगी, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे आग आग जो है स्मोक से कवर्ड होती ही है, उसके आसपास स्मोक होती है, धुआं होता ही है, तो ऐसा है। और तो इसलिए हमें जो है बाय नेचर जो वर्क है उसको हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, त्याग नहीं देना चाहिए, हमें करना चाहिए। इवन अगर इस ऐसे में गलती भी हो तो, उस काम में गलती भी हो तो भी। So in the purport, Srila Prabhupada gives example of Vaishya, of seller who has to sell different things, and part of his professional duty is to cheat people. तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद इसके पर्पट में जो है वैश्य के एग्जाम्पल देते हैं, जो मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं, यानी जो बेचते हैं चीजें, दुकानदार वगैरह, तो वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनको थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है। Like for example, he can tell you, I give you super discount, but actually it is not discount, it is double price of what he is trying to sell you. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो वो बोल सकता है दुकानदार कि आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन क्या पता वो डिस्काउंट ना हो और वो जो है दुगना प्राइस हो जितने का वो बेचना चाह रहा है। It is discount because usually he sells on triple price, but here he decided to sell on double price. So it looks like discount, but it is not. तो वो डिस्काउंट का प्रभु जी ऐसे समझा रहे हैं कि वो डिस्काउंट ऐसे है क्योंकि वो जब और दिन बेचता है तो 3 गुने दाम पे बेचता है, तो आज वो सिर्फ 2 गुने दाम पे बेच रहा है, तो वही है डिस्काउंट। So it is part of his job, otherwise he will lose his money. It is natural and it is allowed by Shastra. तो ये शास्त्रों में अलाउड है, जैसे अगर वो ये झूठ नहीं बोलेगा तो फिर वो जो है पैसे नहीं कमा पाएगा, तो इसलिए ये इतनी चीजें अलाउड है शास्त्र में। So here he writes in the purport to 18.48 that sometimes such people, they hide his profit to stay in business, and he may sometimes have to do business on the black market. These things are necessary, one cannot avoid them. हाँ, तो यहाँ पे लिखा होगा है कि इसी वाले श्लोक में कि उसको ब्लैक मार्केट भी करना पड़ सकता है, तो वो अब ये नहीं कि वो मतलब इसको अवॉइड नहीं कर सकता, उसको करना ही पड़ेगा ये। Or for example, if someone has nature of Shudra, sometimes he have to serve a bad master, and he has to carry out the order of the master, even though it should not be done. जैसे कोई अगर शूद्र है तो वो सर्विस करते हैं, तो अगर उनका जो मालिक है वो अगर बेकार भी है
तो भी जो है उनको सर्व करना पड़ता है, जबकि वो बैड मास्टर को, मतलब गलत मालिक को सर्व नहीं भी करना चाहिए तब भी। Each and every action has its imperfection, according to this verse 18.48. The main point is to follow our nature. Our nature can be Kshatriya nature, Vaishya nature, Shudra nature, Brahmana nature, and so on. The main point is to follow our nature in Krishna consciousness, and there can be some imperfections. And if these imperfections are natural parts of our work, then we should just act accordingly. तो हर कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसमें जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। तो अगर आपके कार्य में कुछ ऐसा है, आपको करना पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। बट मेनली ये है कि हम अपने जो है नेचर के हिसाब से ही हम काम करें। Like for example, here another example is given. Kshatriya, however pious he may be, he has to fight enemies. He cannot avoid it. तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि एक क्षत्रिय है तो उसको जो है लड़ना ही पड़ेगा, और चाहे वो कितना भी धर्मात्मा हो, उसको लड़ना ही पड़ेगा, वो अवॉइड नहीं कर सकता ये चीज, मुकर नहीं सकता। Arjuna was trying to avoid it. He had thoughts that maybe I should avoid it. But Krishna told him that you are Kshatriya, your nature is nature of Kshatriya, so you have to fight. Especially because I'm asking, I am Supreme Personality of Godhead. I'm asking you to do it. Because of that, first of all. And secondly, because you have nature of a Kshatriya. तो अर्जुन के केस भी देख सकते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल। तो वो भी सोच रहे थे कि मैं छोड़ देता हूँ ये, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए भी करना है, आपको लड़ना है। और दूसरा कारण था कि क्योंकि आप क्षत्रिय हो इसलिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। So the same way, if we have spiritual master and if we have some professional obligations, we can go to our spiritual master and we can ask him that my professional duty has such and such imperfections. What should I do with this? And if it is approved and if it is blessed, then we can happily go on with this without any anxieties. तो हम जो है अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि जो है मेरे जो मैं काम करता हूँ उसमें ये चीजें हैं, ये चीजें मतलब गलत हैं, तो वहां से आप आज्ञा ले सकते हैं। तो एक क्या अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं आप करो, तो आप उसको कर सकते हो। The same way, some professional duties should be avoided in Krishna consciousness. पर कुछ जो कार्य हैं, कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को। Like for example, Srila Prabhupada once he was giving initiation to a butcher, and he told this butcher when he gave him Japamala, he told him, no more sin, means you give up your profession of a butcher. तो श्रील प्रभुपाद ने एक कसाई था, तो उनको भी जो है वो दीक्षा दे रहे थे कसाई को भी, और श्रील प्रभुपाद ने जब उनको जपमाला दी, उनको ये बोला कि अब आप जो है कसाई का काम नहीं करोगे। Okay, please write in chat, are you satisfied with the answer or not? Okay, so you are satisfied. You wrote that you are satisfied. Okay, Hare Krishna, thank you very much. So the next question is also Anjana Jai is asking, surrender means to follow the instructions of Guru only or anything else? Well, basically we follow instructions of Guru, Sadhu and Shastra. तो सरेंडर शरणागति का मतलब होता है कि हम किन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करें, उसे ही हम शरणागति कहते हैं। It means when we're speaking about sadhu, it is not that we are following only instructions given by Srila Prabhupada and our initiating spiritual master, but we also take some guidance and instructions from other devotees as well.
तो साधु का मतलब है कि सिर्फ हम श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज का ही नहीं, बल्कि और भी जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनका भी हम लोग जो है जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको भी हम पालन करें। And also we take guidance from Shastra. और जो शास्त्र है उनसे भी हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं। And from these three sources of absolute truth, Guru, Sadhu, Shastra, the most important is Shastra. और तो इन तीनों में गुरु साधु शास्त्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट है शास्त्र। Because Guru is Guru because he is following Shastra. And Sadhu is Sadhu because he is following Shastra. तो ये शास्त्र क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गुरु गुरु हैं क्योंकि वो शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, और साधु भी साधु है क्योंकि वो शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। And Shastra is given by Krishna. Basically, Shastra is non-different from Krishna. और शास्त्र जो है कृष्ण से अलग नहीं है। So it is the most important source, but at the same source of spiritual knowledge. But at the same time, it cannot be understood properly without help of Guru and Sadhu. तो शास्त्र सबसे इम्पोर्टेंट है, पर गुरु और साधु के माध्यम से ही हम शास्त्र को सही तरीके से समझ सकते हैं। So that's why we accept Guru, and that's why we take Vaishnava association in order to understand what Krishna wants from us, what he is telling in Bhagavad Gita. We accept Guru and we take Vaishnava association. तो इसीलिए हम लोग जो है गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, और इसीलिए हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं ताकि हम लोग शास्त्र को सही तरीके से पालन कर सकें। So the answer on your question is that surrender means to follow Guru, Sadhu and Shastra. तो आपका आंसर है कि गुरु साधु और शास्त्र को ही के इंस्ट्रक्शन को पालन करना ही सरेंडर। Okay. Krishna is asking, OMG, Krishna is asking, Prabhuji, give me blessings. My life is full of distractions, so I can be able to handle these distractions. Okay, I will show you one book. Just one moment. I will show you one very important book for you, because you are saying about distraction. Translate, Prabhuji. Translate what I'm saying. Translate. तो प्रभु जी एक बुक दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने डिस्ट्रैक्शन की बात की है, तो प्रभु जी उसी कंटेक्स्ट में एक बुक दिखा रहे हैं। So very nice book for everyone who is distracted. तो डिस्ट्रैक्शन के लिए, सभी के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, द आर्ट ऑफ फोकस। The Art of Focus, written by Gauranga Das. तो गौरांग दास प्रभु जी ने ये बुक लिखी है, तो ये जो जिसको भी डिस्ट्रैक्शन है तो वो ये बुक पढ़ सकते हैं। Again, because just in order to explain how to be focused, we have to arrange the whole seminar. You see, the book is like this. So you better order the book and read it. Art of Focus. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि इसके लिए पूरा एक सेमिनार ही करना पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि इतनी सी बुक है, आप उसको पढ़ लीजिए। And you can also, just by reading this book, you can get blessings from the author of this book, Gauranga Das, who is GBC commissioner. तो ये बुक पढ़ने से आप प्रभु जी गौरांग दास प्रभु जी का भी जो है आशीर्वाद मिल सकता है, जो कि जीबीसी के मेंबर। Yeah, GBC member, yeah. And also, if you will go to Mumbai, maybe you will meet him in Chaupati temple or in Govardhan Eka village. You can go somewhere in these places, and he is always nearby, and you can meet him personally and take his blessings from his lotus feet. तो आप प्रभु जी से भी मिल सकते हैं जुहू चौपाटी में या गोवर्धन इको विलेज में, तो प्रभु जी का आज जाके आशीर्वाद भी ले सकते हैं। Okay, let's go further. Julie Gupta. Hare Krishna Prabhuji Dandavat Pranam. Our material life, we cannot manage our time for spiritual life, and I become inspired to see a pure devotee like you. I require association such type of devotees. If I'm not wrong, could you please share your contact?
your contact with us for devotional service of Godhead, well, you can approach organizers. You can approach organizers and you can go through organizers. तो प्रभु जी कह रहे हैं Hare कि Krishna. जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्रोग्राम के, तो आप उनको Yeah. कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करें. Okay. Now let's go to the chat history. What questions do we have in the chat history? प्रभु जी, one question is there. Mhm. One question is there. So as well as our mind becomes pure, our conviction towards Lord will increase. What should we do to bring firm conviction? Mhm. We have to follow. Are you going to translate the question in Hindi? तो ये क्वेश्चन में है, ऐसा है कि वो पूछ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा मन जो है शुद्ध होता जाता है, तो हमारी जो है कन्विक्शन भगवान की तरफ बढ़ती है, ये पूछ रहे हैं. और ये भी पूछ रहे हैं कि और इस जो कन्विक्शन है, इसको और प्रगाढ़ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. We have to follow the full program. Means holy names, Srila Prabhupada's books, devotional service, prasada, deities, like this. तो इसके लिए जो है फुल प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं. मॉर्निंग प्रोग्राम है, फिर प्रसादम है, डीटी सर्विस है, तो इन सभी चीजों को हम फॉलो करेंगे, तो उससे हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा. And then gradually we will become convicted. Basically, we become convicted because of Vaishnava association. Association with spiritual master and association with those who are serious on spiritual path. तो हमारा कन्विक्शन ऐसे बढ़ेगा कि हम लोग जब एसोसिएशन करेंगे, यानी संग लेंगे ऐसे भक्तों का जो इस पथ पर चलने के लिए बहुत दृढ़ हैं, यानी जैसे गुरु महाराज हो गए, आपके गुरु महाराज, और जो जिसको बोलेंगे ऐसे साधु जो इस पथ पर चलने के लिए बहुत सिंसियरली जो फॉलो कर रहे हैं. It works because we are listening to them. First, we are listening to them. Secondly, we observe their example of their life. And the third point is that we are trying to serve them. तो ये ऐसे काम करता है क्योंकि हम उन्हें सुन रहे हैं, हम उन्हें जो है उदाहरणार्थ उनको एज अ उदाहरण के रूप में लेके चलते हैं, और हम उनकी सेवा करते हैं, तो इस तरह से ये फिर काम करता है. So basically, this process is very nicely described in Bhagavad Gita verse 4.34. तो आप पढ़ सकते हैं 4.34 भगवद गीता में इस प्रोसेस को बताया गया है. Tadvidhi pranipatana pariprashnena sevaya upadakshyanti te gyanam gyanina statva darshanaha. So pranipatana means to surrender. प्रणिपात मीन्स जब हम शरणागत होते हैं. Pranipatana pariprashnena sevaya. Pariprashnena means to ask the questions. परिप्रश्नेन का मीन्स कि हम जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं. And sevaya means to serve. और सेवया मीन्स सर्विस करना, सेवा करना. Very simple. So the same principles that Krishna recommends us to follow in our relationships with spiritual master, the same principles we can practice with other devotees also. We also can ask them the questions. We also can serve them if we see their sincerity and maturity. तो ये चीजें हम जो है जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनके साथ भी, और जो साधु लोग हैं जो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं उनके साथ भी हम ये चीज फॉलो कर सकते हैं. If we see their sincerity and maturity. और अगर वो बहुत सिंसियर हैं और बहुत मैच्योर. Of course, spiritual master has Srila Prabhupada and spiritual master, they have exclusive place in our hearts, but there should be some space, some place for other devotees also in our hearts. तो हमारे हृदय में निश्चित ही जो है श्रील प्रभुपाद और हमारे आध्यात्मिक गुरु के लिए जगह है, लेकिन भक्तों को भी हमें जो है हृदय में स्थान देना चाहिए. Hare Krishna. Some more questions
from the chat history. Prabhuji, last question. Okay. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. How to know that we are moving away from devotion? But who is moving away from devotion? I don't know, Prabhuji. Maybe the person. Okay, translate question in Hindi. Okay. तो ये पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है भक्ति से दूर जा रहे हैं? Well, there are some symptoms. For example, it is not good symptom if we lose taste for chanting holy names of Krishna. तो इसका एक सिम्टम हो सकता है कि अगर हम जो है हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट हमें मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चैंट करने में, भगवान का नाम लेने में हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं. Also, it is not nice when we are trying to avoid devotees. और ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि हम भक्तों को जो है अवॉइड कर रहे हैं. Well, in one of letters written to Jayapataka Swami, Srila Prabhupada writes that if some devotees, if they don't have good manners, if they don't behave properly, then they should be avoided. It is one thing, it is normal to avoid such people, but if we avoid devotees in general, then this symptom is not good. तो अगर आप किसी मैनर्स है तो किसी के बैड मैनर्स हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने लिखा है जयपताका स्वामी महाराज को कि बैड मैनर्स है तो अवॉइड कर सकते हैं, पर भक्तों के अवॉइड करना ये अच्छी बात नहीं. So in Nectar of Instruction, I can recommend to read Nectar of Instruction, verse 2 and 3. It is written that basically it is important to see what is our proportion in our life, how much of materialistic association I have in my life and how much of spiritual association I have in my life. तो उपदेशामृत पढ़ सकते हैं आप, उसके दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया यही है कि आपको देखना चाहिए कि हम कितना जो है भौतिक जगत के लोगों से हम कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं, भौतिकवादी लोगों से, और जो है आध्यात्मिक तौर पे यानी भक्तों से हम लोग कितना अपना संग बढ़ा रहे हैं. Basically, this process, how living entity becomes more and more far away from devotion, this process is described in the second verse of Upadeshamrita. तो ये बताया गया है कि कोई भक्ति से कैसे दूर जाता है, तो ये उपदेशामृत के सेकंड वर्स में बताया गया है. Everything starts from this desire to have more luxury life. तो सब इस चीज की शुरुआत होती है कि कोई बहुत ही लग्जूरियस लाइफ चाहता है. Because one wants to have his life more luxury, he has to put more endeavors to remain on this standard of life, and he has to have materialistic association, and it takes time, it takes resources, and it distracts from spiritual life. तो अगर कोई ज्यादा लग्जूरियस लाइफ के लिए प्रयत्न करेगा तो उसको फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा जो है भौतिकवादी लोगों के संग में रहना पड़ेगा, जो कि आध्यात्मिकता के लिए अच्छा नहीं. So that's why Srila Prabhupada, he writes in that book, Nectar of Instruction, verse number 2, that don't try to make your life complicated. तो प्रभुपाद जी अपने परपट में बताते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ को ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए. And he gives such slogan which describes our approach to spiritual life. The slogan is simple living, higher thinking. तो प्रभुपाद जी ने स्लोगन भी इस चीज के लिए दिया है जो हमारे आध्यात्मिक लाइफ में हमें अप्लाई करना चाहिए, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग. And it means that we have some basic physiological needs for our gross body, for subtle body, for just to maintain ourselves in this life. So whatever is given, usually it is sufficient. One can just be satisfied with this without any additional endeavors to get some
some extra comfort. If comfort is there is no need of extra comfort. If comfort, some basic comfort is already here. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर मेंटेनेंस के लिए जितना जरूरी है हम उतना कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी जब मेंटेनेंस में कंफर्ट है तो हमें एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए फिर नहीं जाना चाहिए. Because if one wants to be in this extra comfort zone, not just comfort zone, extra comfort zone, he has to put additional endeavors to remain in this zone. And it means that this energy, this attention, he cannot dedicate it to Krishna because it goes for these extra desires. तो अगर वो ज्यादा ही एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए भागेगा, बहुत आरामदायक जीवन के लिए भागेगा, तो उसको अपनी सारी दृढ़ता, मेहनत, फिर प्रयत्न उसके लिए करना पड़ेगा, जो कि फिर आध्यात्मिकता के लिए अच्छा नहीं. So that's why very important rule for spiritual life that just keep it simple. Keep simple your material circumstances of life and keep your spiritual life, keep it simple also. तो आप तो इसका बहुत ही सोल्यूशन है, इसका रास्ता ये है कि आप सरल जीवन जिए, आध्यात्मिकता में भी बहुत ही सरल रहें, और जो है अपने भौतिक जो जितना जरूरी है सरलता मेंटेन करें. Okay, so as far as I understood, questions are over and we can wish each other Shubhoratri, right? Yes, Prabhuji. Uh-huh. So thank you all of you for joining this session, and we will all thank you, Prabhuji, by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Prabhuji, please forgive me. I know I have made some mistakes in translation, because this was my first time. I've never done it, and I'm not good at this thing. No, you are good. You are good, and people in chat they also can read. You can read. They glorify you that your translation is good. They wrote. That's okay. Don't worry. Translation is nice. Hare Krishna. Thank you very much, dear friends. We will see you next time. I don't know when this next time will happen, but we will see you anyway next time. So प्रभु जी कह रहे हैं कि अगली बार मिलते हैं. अभी पता नहीं है कि अगली बार कब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे. Hare Krishna. Hare Krishna, प्रभु जी. Thank you so much for joining. Thank you so much. ओके, सो आप सभी लोगों का बहुत ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं. एंड अगर आप भगवत गीता रीड करना चाहते हैं ऑन एक रेगुलर बेसिस पे, सो आप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन जो भगवत गीता ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. रोज रीडिंग होती है वहाँ, एंड एक श्लोका पर भी डिस्कशन होता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चंस भी राइट डाउन कर सकते हैं. देन यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. हरे कृष्ण.